Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the inductive arguments and statistical generalizations. In the previous lecture, we have discussed about the construction of truth tables from different scenarios, from different expressions, and from different statements or arguments. And today we are going to discuss about inductive arguments and statistical generation. It is our next topic in the course of Introduction to Logic. We have there discussed about the inductive and deductive arguments in the previous lectures. What is the difference between these two? We said that inductive arguments are those arguments about which we are probably sure that the conclusion will be true or false. Mean there is a probability of the validity, or you can say of the truthness of the argument. And in deductive reasoning, we are surely or certainly say that the result will be true or valid. So one difference is that. The second difference is that inductive arguments, we move from specific to generalization, and in the deductive reasoning, we move from the generalization to specific. So these are the two differences between the inductive and deductive arguments. We have to come across between among these two arguments throughout the course of Introduction to Logic, your logical thinking. So in the today lecture, we are going to discuss about the inductive arguments and statistical generalization. In these lecture, we are going to learn about how we can conclude in the inductive arguments on the basis of statistical generalizations. As you know that an inductive argument is an argument whose conclusion is opposed to follow from its premises with a high level of probability rather than with certainty. This means that although it is possible that the conclusion does not follow from its premises, it is unlikely that this is the case. We said that inductive arguments are defeasible, meaning that we could turn a strong inductive argument into weak inductive argument simply by adding further premises to the arguments. And we have done and we have go through this practice in the last lectures. In contrast, deductive arguments that are valid can never be made invalid by adding further premises. For example, take the case that tweets is a healthy, normally functioning bird. Most healthy, normally functioning birds fly. Therefore, tweets probably fly. It is a probability, and it is an argument that the healthy tweets are functional birds and the functional birds can fly. Therefore, tweets can fly. So now, if the size of the tweets is 6 feet and its speed is about 30 mph, then how it is possible that it can fly? So therefore, in this argument, we say that it is there is just a probability occur here. So this type of case is called statistical generalization. Statistical generation are generalization arrived by the empirical observation of certain regularities. Statistical generalization can either be universal or partial. Mean universal generalization asserts that all members of a certain class have a certain features, where partial generalization asserts that most or some percentage of the members of a class have a certain features. सिंपली बात यह है बेटा कि स्टैटिस्टिकल जनरेशन हमें किसी भी सिनारियो के बारे में ये बताता है कि कितने परसेंट, यानी कोई ख़ास स्टैटिस्टिक बताता है कि कितने परसेंट जो है वो इसमें ट्रू होने के चांसेस है, और कितने परसेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, और या 100% इन्वॉल्वमेंट की बात करता है स्टैटिस्टिकल जनरेशन, क्योंकि इसके दो टाइप्स है, एक यूनिवर्सल जनरेशन है और एक पार्शियल है। यूनिवर्सल है तो किस चीज़ के बारे में ये बताता है कि इस पॉपुलेशन में या इस कलेक्शन ऑफ डेटा में 100% जो है वो सर्टेनिटी है कि एक काम ऐसा होगा, लेकिन जहाँ पार्शियल होगा वो कुछ पोर्शन बताएगा कि इतने पोर्शन में ये काम हो सकता है। Take the case that it has been claimed that 67.5% of all prison released from the prison are arrested within 3 years. Is a partial generation that is much more precise than simply saying that most prisoners released from the prison are arrested within 3 years. In contrast, the claim that all prisoners released from the prison are arrested within 3 years. अब आप खुद देख लीजिए कि एक में 67.5% प्रिजनर्स जो छूट जाते हैं जेल से, वो बाद में विदिन 3 years अरेस्ट कर दिए जाते हैं। ये एक हमें एक रेशियो बता रहा है, एक पार्शियल जनरेशन है।
और दूसरे में बताया जा रहा है ये इसकी निस्बत ज़्यादा स्ट्रांग आर्गूमेंट है कि जहाँ कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्रिजनर आर अरेस्टेड आफ्टर आफ्टर द रिलीज विद इन 3 years। वो एक जो है वो एक जनरल सी स्टेटमेंट है। लेकिन जहाँ कहते हैं कि ऑल प्रिजनर आर अरेस्टेड, जहाँ यूनिवर्सल जनरेशन होती है कि ऑल, इन कंट्रास्ट द क्लेम दैट ऑल प्रिजनर आर अरेस्टेड। सो एज वी कैन सी फ्रॉम these example, deductive arguments typically use universal generalization, whereas inductive arguments typically use partial statistical generalization. It is the third difference between the inductive and deductive reasoning or inductive and deductive logic. Since statistical generation are often crucial premises in both deductive and inductive arguments, being able to evaluate when statistical generalization is good or bad. Being good or bad, what we are doing in evaluating statistical generalization is determining whether the premises in our argument is true or false. So it's mean that if we want to construct or deduct or derive some conclusion from again arguments, for example, consider the following inductive argument whose premises is a partial statistical generation. 70% of voters say that they will vote for the candidate X. Therefore, candidate X will probably win the election. So, in this argument, we are sure about this thing that it is inductive argument because the word probably has been used here, and also. The second proof with us is that there is a partial generalization is used. 70% of the voters say that they will vote for the candidate X. So now it is not sure that all the candidates, 70% candidates will vote for the candidate X. So therefore, we said that it is not possible. It is a probability, and therefore we can't derive a correct conclusion from it, or you can say valid conclusion from it. So therefore it is an inductive argument. So this inductive argument is our generalization, partial generalization can then be of two types. One is called adequate sample size and the other one is called non-biased sample. Adequate sample biased is a sample is what? First of all, we will define what is sample. A sample is simply a portion of population about which we are going to discuss something. Mean the collection of data about which we are discussing, and we are detecting some, deriving some conclusion from that, or we are discussing about some conclusion of that. So a population is the totality of members of some specific set of objects or events. So at here beta, अगर हम ये देख लें कि एडिक्ट सिंपल क्या होता है, तो अगर हम एक पॉपुलेशन दिया गया है कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि हमारे घर के सामने जो रोड है, उस रोड पर कितने जो है वो ट्रक्स जो है वो बमुकाबला कार्स या कार्स बमुकाबला ट्रक्स गुजरते हैं, यानी कितने ट्रक्स और कितने जो है वो कार्स का पोर्शन गुजरता है। तो इस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए एक तो ये है कि मैं होल जो है वो उस प्रोसेस को वो कर लूँ, यानी वॉच आउट कर लूँ फुल टाइम, जिसको हम कहते हैं फुल जनरलाइजेशन कहते हैं, कंप्लीट जनरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और एक हम ये कहते हैं कि पार्शियल जनरेशन हो, तो उसमें मैं कुछ सैंपल कलेक्ट कर लूँ, और ऐसा सैंपल कलेक्ट कर लूँ। एडिक्वेट सैंपल वो होगा कि जो साइज़ में कम से कम इतना हो कि जिससे मैं कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट कंक्लूड कर सकूँ। दैट इज कॉल्ड एडिक्वेट सैंपल। मीन द सैंपल साइज मस्ट बी लार्जर इनफ टू सपोर्ट द जनरलाइजेशन, जिससे मैं जो चीज़ डिराइव करना चाह रहा हूँ वो डिराइव हो सके। दैट इज कॉल्ड एडिक्वेट सैंपल साइज। यानी मैं किसी ख़ास वक्त में बैठकर जो है वो देख लूँ 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा एडिक्वेट टाइम में, कि जिसमें मैं जो डेटा कलेक्ट कर लूँ उससे मेरे पास कुछ रीजनेबल जो कंक्लूजन है वो निकल सके। दैट इज कॉल्ड एडिक्वेट सैंपल साइज। और दूसरा होता है नॉन बाइस्ड सैंपल साइज। दैट सैंपल साइज मस्ट नॉट बी बाइस्ड। मीन कि ऐसा ना हो कि मैं किसी खास वक्त में कि जिसमें ट्रक ज़्यादा गुजरते हो उस वक्त बैठ जाऊं तो कह दूं कि इस वक्त जो है यानी पूरे उस पर मैं उसको अप्लाई करूं कि इस रोड पे ट्रक्स जो है वो कार्स के मुकाबले में ज़्यादा गुजरते हैं, या किसी एक से वक्त में बैठ जाऊं कि जहां पर कार्स कम होते हैं, ठीक है, नाइट टाइम में, और ट्रक्स ज़्यादा गुजरते हैं, तो मैं फिर उसको अप्लाई करूं तमाम जनरलाइजेशन पे। इसको हम कहेंगे बाइस सैम्पलिंग, ठीक है। नॉन बाइस सैम्पलिंग ये होगी कि मैं ऐसे वक्त में सैंपल कलेक्ट कर लूँ किसी पॉपुलेशन के बारे में कि जिसमें मेरे पास
करेक्ट डाटा, नॉन बायस डाटा जो है वो कलेक्ट हो सके, और जिससे मैं सही एक्यूरेट जनरलाइजेशन कर सकूं, ताकि मैं जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसकी से जो मैं कंक्लूजन ड्रा करना चाह रहा हूं, वो कंक्लूजन में नॉन बायस और एडिक्वेट सैंपल की बेस पे ड्रा कर सकूं। तो ये हमारे पास जनरलाइजेशन के दो टाइप्स है बेटा, और इस पर अगर आप देख लें, अगर इसमें कोई ऐसा नहीं करता कि जो जो नॉन बायस हो, एडिक्वेट सैम्पलिंग हो, तो दैट इज कॉल्ड हैस्टी जनरलाइजेशन। ठीक है, व्हेन वन इन्फर्स अ स्टैटिस्टिकल जनरेशन आइदर यूनिवर्सल और पार्शियल अबाउट अ पॉपुलेशन फ्रॉम टू फ्यू इंस्टांसेस ऑफ दैट पॉपुलेशन, यानी कोई शख्स जो है वो छोटे छोटे सैंपल कलेक्ट करके कह दे कि ये अप्लाई कर दे एज अ होल जनरेशन पे, तो दैट जनरेशन विल बी known as hasty generalization, that is not suitable for the conclusion or correct or valid conclusion from a sample or whole population. Clear? So this was discussed in our today lecture, that what is inductive reasoning and what is generalization, what is universal generalization, and what is partial generation, and what is hasty generalization, and what are sampling, and what are the types of sampling. In today's lecture, my dears, we have discussed about this thing, and I hope that you will completely understood this thing. And if you have any question, then you can ask these questions in the WhatsApp group that we have already been in touch with each other. So therefore you should try to do this thing. And the other sampling method is called random sampling. That is, random sampling is a method in which we collect the sample at different times for different situations, and then we draw conclusion from that sampling is called a random sampling mean not to a specific time, not to a specific type, but randomly we conduct the sampling, and on the basis of that we draw conclusion. So that is called what? That is called random sampling. So an exercise has been given here. Inshallah, in the next lecture I will try to solve this exercise and then discuss with you. Okay beta, thank you very much.